रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया है। So there are different ways to run the Jenkins jobs, right? तीन मैनुअल भी कर सकते हो, स्केड्यूल भी कर सकते हो, और किस एक्शन पे भी उसको तुम कर सकते हो, राइट? इंटीग्रेशन मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि हर एक टूल के साथ जेनकिन का इंटीग्रेशन होता है, उसके लिए उसने उस पर्टिकुलर टूल का अपने को प्लगइन्स इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट? ऑटोमेटेड बिल्ड जो मैनुअली स्टेप्स करते हैं वो ऑटोमेट कर सकते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग भी अपन उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, एंड ये सबका बेनिफिट क्या होगा? फास्टर डिलीवरी, राइट? अगर मैनुअली तुमको 3-4 चीजें करनी है तो वो 1 सेकेंड में जेनकिन कर देगा। व्हाई? बिकॉज वी ऑलरेडी डिफाइन दो स्टेप्स इन आवर जेनकिन पाइपलाइन, एंड वेन एवर द पाइपलाइन विल गेट ट्रिगर्ड इट विल just do quick, just within second it will just run the commands. That's why our delivery will become faster, right? And what are the different things again we can do? We can remove the manual steps, right? Because once we automated everything, we don't need to perform any manual steps on that, right? Because all the steps has automated, these are present on our pipeline. So pipeline different types के होते हैं Jenkins में, but first of all I'll just talk about why Jenkins, right? So Jenkins क्यों करते हैं? Because of remove the manual steps. जो भी मुझे manual steps करने हैं, I don't want to perform those. I can integrate with multiple tools. ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग उसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, स्कैनिंग का टेस्ट करना है, तुमको कोड स्कैन करना है, एवरीथिंग whatever the things we are going to do manually on our code, each and every step we will do in Jenkins with automation, right? तो this is about Jenkins. बाद में अपन ने कल Jenkins इंस्टॉल भी किया है, एंड देन Jenkins क्या होता है? मास्टर एंड एजेंट का होता है, राइट? मास्टर एंड एजेंट और मास्टर एंड नोड और मास्टर एंड स्लेव का कॉम्बिनेशन होता है। ये क्यों होता है वो अपन अभी देखते हैं, राइट? व्हाई मास्टर एंड व्हाई जेनकिन नोड? नोड मतलब क्या होता है, राइट? जैसे अपन ने कल किशोर के मशीन पे ये जेनकिन इंस्टॉल किया था, जेनकिन इंस्टॉल करने के बाद बाय डिफॉल्ट जिस पे जेनकिन रहता है दैट इज योर मास्टर, राइट? तो इसमें एक पाथ होता है। क्या पाथ था, कौन बताएगा? ज्योति, क्या था पाथ? ये किस पाथ पे रहता है जेनकिन का सब डिटेल्स ऑन आवर योर मशीन? सर /etc/ कल 3 बार दिखाया था मैंने। वेयर लीव एंड जेनकिन नाम का फोल्डर होता है। ओके सर, होम डिरेक्टरी जेनकिन्सची का? हा, नाही, त्या ठिकाणी जेनकिन सगळ्या गोष्टी ठेवतो, त्या ठिकाणी इन्स्टॉल करतो, त्या ठिकाणी yesterday we saw. ओके हा, यस so यस this is the default directory when we install a Jenkins on machine, right? etc वाला तो वो अलग है, दैट इज ओएस लेवल का रहेगा, वो सिस्टम लेवल का। दिस इज जहां पे जाके तुम Jenkins के डिटेल्स चेंज कर सकते हो, राइट? सो वेयर वी हैव एवरीथिंग अबाउट Jenkins, उसके क्या प्लगइन्स अपन ने डाले हैं, कितने जॉब्स बनाए हैं, वर्कस्पेस कितने क्रिएट किए, उसके सीक्रेट्स क्या है, उसका पासवर्ड, everything about Jenkins we will see inside a Jenkins folder on this particular path on your Linux machine. This is for Linux, not for Windows. Windows का प्रोग्राम फाइल में रहेगा, right? But this is a master node. Master मतलब क्या? जिस पे अपना Jenkins इंस्टॉल है। अभी नोड की क्यों जरूरत है, राइट? So this there are a different nodes. अभी इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, that we will cover, right? For example, मेरे पास अभी विंडोज का एक कोड है, राइट? जावा का एक कोड है, पाइथन का एक एप्लीकेशन। सो आई हैव 3 डिफरेंट एप्लीकेशंस, राइट? व्हिच आई नीड टू ऑटोमेट यूजिंग Jenkins, राइट? अभी विंडोज का एप्लीकेशन है इन द सेंस क्या कि विजुअल स्टूडियो और सी शार्प में बना हुआ एप्लीकेशन, एंड दे आर यूजिंग अ विंडोज बेस्ड डिपेंडेंसी, राइट? सो व्हेनेवर वी नीड टू बिल्ड अ विंडोज एप्लीकेशन वी नीड अ विंडोज मशीन, right? I'm just giving the scenario why we need different nodes or agents or slaves in Jenkins, और वो उसका 2-3 यूसेज है। So first of all, what if there is an application which need a specific configurations,
राइट। अगर विंडोज बेस्ड का एप्लीकेशन रहेगा सो उसको विंडोज ही मशीन लगेगा। सेकेंड एग्जांपल, अगर में कुछ iOS का एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, सो फॉर दैट वी नीड अ मैक मशीन, राइट। मैक मशीन के सिवा उसमें एक्स कोड रहेगा, एक्स कोड के सिवा तुम सी स्विफ्ट लैंग्वेज होती है iOS का डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट करने के लिए। अगर आपको आईफोन का एप्लीकेशन बनाना है तो उसका खुद का एक आईडी होता है विच इज एक्स कोड, के अंदर वो स्विफ्ट नाम का लैंग्वेज में कोड लिखते हैं, दैट मीन्स उसको मैक मशीन लगेगा, राइट। आईओएस का बिल्ड तो तुम विंडोज मशीन पे या फिर लिनक्स मशीन पे नहीं बिल्ड कर सकते हो। दिस इज द वन डिपेंडेंसी फॉर एप्लीकेशन ऑफ एप्पल। विंडोज के एप्लीकेशन के लिए वी नीड अ विंडोज सर्वर और विंडोज मशीन, सर्वर एंड मशीन इज सेम। सिंपल जावा एप्लीकेशन है दैट यू कैन बिल्ड एनीवेयर, राइट। जावा इज ओपन सोर्स, so that application you can build on windows server, windows machine, mac machine और linux machine, राइट। सो अभी मेरे पास आई डोंट नो, राइट, माय कंपनी और माय ऑर्गेनाइजेशन इज डिप्लॉइंग और डेवलप डूइंग अ डिप्लॉयमेंट और डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स, राइट। सो आई हैव अ डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट्स। वन क्लाइंट मेरा मैक का है जिसके लिए iOS का एप्लीकेशन बना रहा है, ये कोई क्लाइंट है उसको जावा का एप्लीकेशन बना, राइट। जैसे एग्जांपल लो इन्फोसिस का या फिर टीसीएस का, उसके पास हजारों क्लाइंट रहेंगे, हजारों क्लाइंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट रहेगी, राइट। ऐसा नहीं है कि सारे क्लाइंट को लिनक्स की मशीन चाहिए, नहीं। सर 99% तो सर्वर लिनक्स के ही होते हैं। बट अगर किसी को स्पेसिफिक विंडोज का ही एप्लीकेशन बनाना है, अगर किसी को स्पेसिफिक मैक का ही एप्लीकेशन बनाना है, मैक का इन द सेंस iOS का एप्लीकेशन बनाना है, सो फॉर दैट वी नीड अ विंडोज मशीन, वी नीड अ मैक मशीन और वी नीड अ लिनक्स मशीन, राइट। अगर तुम ये विंडोज का लिनक्स मतलब जेनकिन में ये सर्वर नहीं रहेंगे, राइट, इफ वी डोंट हैव अ स्लेव, so how can we build this application on this server, this application on the same server, the linux application on the same server? It is not possible, right? Why? Because this is linux machine where I just install a jenkins software or jenkins CI/CD tool, which will not going to build or which will not help us to build the windows application, build the iOS application, right? This is the one dependency. We cannot run everything on our master. That is first point, right? First point clear आया, why we need a slave agent architecture in Jenkins. अभी सेकंड एग्जांपल क्या है, दिस इज अ मास्टर, राइट। अभी फॉर एग्जांपल ये मैक का एग्जांपल भूल जाओ, विंडोज का एग्जांपल भूल जाओ। राइट नाउ आई हैव ए एप्लीकेशन, बी एप्लीकेशन, सी एप्लीकेशन एंड डी एप्लीकेशन, राइट। आई हैव अ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन और ये मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में है। दिस इज नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट, ये पूरे क्लाइंट का ही है, सबका क्लाइंट एक ही है, बट दे हैव अ डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स, राइट। अगर मुझे इसका भी एप्लीकेशन इसमें बिल्ड करेगा चलेगा, ये भी इसमें करेंगे चलेगा, ये भी इसमें करेंगे चलेगा, और ऑल दोज 4 एप्लीकेशन वी कैन बिल्ड ऑन मास्टर। बट जेनकिन फोल्डर के अंदर क्या होगा, जॉब्स नाम का फोल्डर रहेगा जो आपने कल देखा था। उसके अंदर आपने क्या किया था, कल टेस्ट फोल्डर जॉब बनाया था, वैसे ही उसके अंदर ए जॉब बनेगा, बी जॉब बनेगा, सी जॉब बनेगा एंड डी जॉब बनेगा, ये 4 एप्लीकेशन के लिए, राइट। टेक एन एग्जांपल ऑफ ए, बी, सी एंड डी। सो whenever we define those 4 jobs, 4 pipelines on your Jenkins master, it will by default will go to Jenkins jobs, राइट। उसके अंदर उसकी डायरेक्टरी बनेगी, उसका वर्क स्पेस बनेगा, उसके लिए लगने वाले प्लगइन्स बनेंगे, प्लगइन्स तो मास्टर पे रहेंगे फॉर श्योर, बट ये सारे जॉब्स उस पे बनेंगे। तो इसके बनेगा मतलब क्या हुआ, ये तो मास्टर है अपना, दैट इज ट्रू, बट ये इसमें भी इस प्रोजेक्ट के लिए 4 बंदे काम करते हैं, इस प्रोजेक्ट के लिए भी 4 बंदे काम करते हैं। ईच एंड एवरी प्रोजेक्ट हैज 4 रिसोर्सेज, राइट। अभी 4 रिसोर्सेज से मतलब क्या, इस चारों को भी जेनकिन मास्टर का एक्सेस देना पड़ेगा, नहीं तो वो एप्लीकेशन पे काम नहीं कर पाएंगे, दैट इज ट्रू। अगर ये 4 लोगों को, 4 प्रोजेक्ट को 4 into 4 मतलब 4 4 16, 16 people are working on master, right? Why? Because each project has 4 DevOps and 2 lead or architect, right? अगर ये 16 लोग इस मशीन पे मास्टर पे काम कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होने वाला है कल परसों, राइट। व्हाई? बिकॉज ही इज वर्किंग ऑन ए डायरेक्टरी, ही इज वर्किंग ऑन बी, सी, डी। if something broken from one of the team member from D project,
इसमें से ए बंदा है, इसने कुछ तो गलत किया, गलती से उसने ए प्रोजेक्ट में डी प्रोजेक्ट में जाने से अच्छा उसने ए प्रोजेक्ट को रन किया, राइट। उसने ए को रन किया, अननेसेसरी इस बंदे की पाइपलाइन डिप्लॉय हो गई प्रोडक्शन, उसको करना ही नहीं था और फेल हो गई अननेसेसरी। इसका डी का और ए का तब दूर दूर तक ही संबंध नहीं, राइट। स्टिल he has broken everything for the project. Why? Because they all are working on same machine, which is master, right? So if you want to skip such kind of problems or issues or mistakes, Jenkins is recommended. You don't run any job on master. That is a recommendation from Jenkins, and that is the best practice from Jenkins, or that is the best practice from CI/CD perspective in DevOps industry. Why? Because if somebody is doing something on same machine at the same time, if other team member are performing some actions, they might make some mistakes, and that mistake will happen on production or any customer. So if you want to avoid such kind of issues, we may have to go for slave and master or master agent architecture, right? This is second problem. First problem we already discussed. First problem or first use case, it will not gonna work on your single master machine. Second problem will create thousands of issues at the runtime, right? Because right now we have just taken an example for 4 application and 16 people, but in industry there are 50-60 people in a single project, and there might be a 17-18-20 projects inside one Jenkins job, right? If you take an example of bank project, it will have more than that. So in such kind of projects, applications or team, we may face such kind of issues many times. That's why if you want to avoid that, you don't do anything on master. Just keep a master plane with just Jenkins installation, whatever the plugins, that's it, and secrets. Except those 2 to 3 things, you don't perform any action on master. That is the good approach to do any CI/CD pipeline on DevOps journey. Cool so far? Why we don't need to do everything on master? तो उसके बेनिफिट्स तो कुछ भी नहीं है, बट देर आर लॉट्स ऑफ ड्रॉबैक्स, राइट। फर्स्ट ड्रॉबैक्स तो ये छोड़ो, मिसमैच करेगी, डिलीट कर, दैट इज द सेकेंडरी scenario. But the first scenario, it will not gonna work on master, because master is your Linux machine, and if I need a Windows, I need a Mac, and I need a Linux another flavor, right? अभी Ubuntu पे बनाया, but I need a CentOS, I need a Fedora, right? Because I don't want to disturb my Jenkins. Why? Let's say इसने यहाँ का भी कुछ disturb किया, तो automatically all Jenkins server will get compromised, right? This is first thing. Second thing, why? User management is there. That's why nobody will have direct access to master. अगर 16 बंदे को मास्टर का एक्सेस ही नहीं है, तो वो पाइपलाइन क्रिएट ही नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं कर सकते, रन भी नहीं कर सकते. Why? Because we don't need to give the master full access to each and every team member. Why? Because they will definitely made some mistakes. अगर sudo apt अपडेट भी कमांड उसने मास्टर पे मारा, तो सारा डिस्टर्ब होता है once we update the server. Why? Because जो करंट वर्जन है सिस्टम का भी, जेनकिन का भी, एप्लीकेशन का भी, वो कंफर्टेबल सबके साथ है. बट अगर आपने सिस्टम अपडेट किया, यू मे नीड टू अपडेट एवरीथिंग, और इट विल ब्रेक समथिंग इनसाइड योर जेनकिन. बिकॉज जो भी लेटेस्ट वर्जन आते हैं सॉफ्टवेयर के, नॉट नेसेसरी ऑन एवरी न्यू रिलीज दे विल बैकवर्ड कंफर्टेबल और फॉरवर्ड कंफर्टेबल. पॉसिबल होता है, कभी नहीं होता है. सो इन दैट केस nobody will give you the control access of master node, राइट? उसका कंट्रोल तुमको पूरा कोई नहीं देगा. दे विल जस्ट क्रिएट अ सिंपल जॉब, जैसे अपन ने कल टेस्ट क्रिएट किया था, एंड टेस्ट के अंदर तुमको जो करना है तुम करो. आउट ऑफ टेस्ट यू कैन नॉट परफॉर्म एनी सिंगल एक्शन, राइट? सो दिस इज द सिनारियो व्हाई वी नीड अ मास्टर and agent configuration or a structure on Jenkins.
ठीक है, तो अपन ने अभी व्हाई वी नॉट यूज जेनकिन उसके यूज केसेस सी मतलब देखे. नाउ वी विल सी व्हाट दिस एजेंट विल सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स और नॉट, राइट. सो अभी मेरे पास अभी पहले एग्जांपल पे चलते हैं, मैक विंडोज एंड लिनक्स की अदर फ्लेवर, राइट. सो दिस इज अ मास्टर वेयर आई हैव एवरीथिंग सेट अप कूल. नाउ आई विल क्रिएट वन मोर मशीन फ्रॉम विंडोज. दिस इज विंडोज मशीन फ्रॉम AWS. Here I will create another machine which is Mac machine from AWS. Here I will create another Linux bit. This will be a Fedora flavor, right? Fedora is another flavor of Linux. Now, once we create a machines on Linux, on Windows or Linux, कौन सा भी machine रहेगा, how we communicate with that machine, right? This is just a normal machine or virtual machines, right? Machines in the sense laptop. तो इसका यूआई मिला क्या, कभी किसने EC2 इंस्टेंस का यूआई देखा क्या, नो. वी विल एक्सेस इट थ्रू कमांड लाइन. विंडोज का तुम यूआई ले सकते हो, इवन दो मैक भी ले सकते हो, बट अभी ये तो अलग मशीन है विंडोज मास्टर वाला, इसलिए अलग है. हाउ मास्टर विल नो वेयर इज माय एजेंट, राइट. हाउ मास्टर विल नो वेयर इज माय मैक एजेंट, वेयर इज माय विंडोज एजेंट और वेयर इज माय Linux Fedora agent. So there are two different ways to communicate. Master will communicate with agent. So first is username and password, and this is not recommended. लोग ज्यादा username password नहीं करते, because if we do it, you have to share that username and password with everybody. Instead of that, we can do our favorite SSH connection, right? तो वो कैसे करते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहता है, that everything we will see in practical sessions. But just here the very first. So SSH communication कैसे होता है, it will have private key, public key. जिसको कनेक्ट करना है उसके साथ उसके पास पब्लिक की होनी चाहिए, जो कनेक्ट करने वाला है उसके साथ प्राइवेट की होनी चाहिए. Once we define those two keys inside .ssh folder inside authorize underscore key, then it will by default communicate with those two or three agent, whatever the agent you have, right. So सबके साथ उसका अलग अलग पब्लिक की एंड प्राइवेट की आपको लिखना देना पड़ेगा, राइट. दिस इज फर्स्ट टाइम एफर्ट, नॉट एवरी टाइम. एक बार वो बना दिया, नाउ राइट. अभी मैं यहाँ पे पाइपलाइन लिखूंगा. अभी मैं मेरे मास्टर पे आया. नाउ आई हैव टू राइट अ पाइपलाइन फॉर माय मैकबुक और iOS एप्लीकेशन. सो आई हैव दिस एजेंट, आई हैव दिस एजेंट, आई हैव अनदर एजेंट. नाउ आई हैव अ विंडोज एप्लीकेशन, लिनक्स एप्लीकेशन एंड मैक एप्लीकेशन, राइट. सो हियर इज अ मास्टर. सो इसमें मैंने जेनकिन इंस्टॉल किया है, इस पे जावा है. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, एजेंट पे जेनकिन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती. एजेंट पे जेनकिन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है. बाय डिफॉल्ट मास्टर विल टेक केयर. ओके, इंपॉर्टेंट चीज है ये. सो जेनकिन के नोड पे अपने को जेनकिन इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज इंटरनली मास्टर विल कम्युनिकेट विद दैट एंड जस्ट रन द पाइपलाइन ऑन दैट पर्टिकुलर machine. So here I will just write a pipeline, Mac pipeline, Windows pipeline and Linux pipeline, right. अभी लिनक्स पाइपलाइन बनूंगा तो इस पे मुझे क्या देना पड़ता है, एजेंट, राइट. बाय डिफॉल्ट एजेंट होता है मास्टर. जेनकिन पाइपलाइन में बाय डिफॉल्ट एजेंट कौन होता है, मास्टर. जैसे अपन ने कल किशोर के मशीन पे रन किया तो उसने कहाँ पे रन किया, मास्टर पे. व्हाई, बिकॉज देयर वाज नो एनी एजेंट, सो बाय डिफॉल्ट इट विल गो ऑन योर मास्टर नोड, राइट. बट अगर यहाँ पे पाइपलाइन में आपको लिखना पड़ता है एजेंट इक्वल टू उसका नाम देना पड़ता है, लेट्स से विंडोज, मैक एंड लिनक्स. जब ये तुम पाइपलाइन रन करोगे, दिस विल फर्स्ट फाइंड आउट वेयर इज माय मैक एजेंट, राइट. ये कहीं भी रह सकता है, इसका सिर्फ एसएसएच कम्युनिकेशन होना चाहिए, दैट्स इट. दिस इज अ डिफरेंट मशीन, दिस इज अ डिफरेंट मशीन, दिस इज अ डिफरेंट मशीन एंड दिस इज आल्सो डिफरेंट मशीन. So once you define the agent, once you made a communication or configuration with them, then you have to just mention that agent name on your pipeline, right. Pipeline कौन से होते कैसे होते, we will see that later. But and second thing, when we define a pipeline for Windows, it will just go for Windows machine.
whenever you write or you wrote a pipeline for Linux, it will by default will go to the Linux machine. तो इसके अंदर फिर जॉब बनेंगे, इसके अंदर क्या बनेंगे, अब ये जॉब्स बनेंगे, और जो तुम लेटेस्ट कोड लोगे, यहाँ पे गिट है, यहाँ से गिट ये लेगा, यहाँ पे बिल्ड करेगा, फिर कहीं और वो पुश करेगा, या फिर कहीं और वो डिप्लॉय करेगा। एक्चुअल काम कहाँ होने वाला है, हमारे नोड पे या फिर एजेंट पे, राइट। मालिक कभी भी काम नहीं करता, वो ड्राइवर को या फिर घर के सर्वेंट को बोलता है जा पानी लेके आ, ये कर, वो हो, राइट। दोज आर एजेंट्स, राइट। एक्चुअल काम कौन करता है, एजेंट्स। ऑर्डर कौन देता है, मालिक यानी मास्टर। मास्टर खुद कुछ नहीं करता, वो सब करवा के लिखता है बेस्ट ऑफ। कि अगर ये मालिक अकेले ड्राइविंग भी करेगा क्या, खाना भी बनाएगा क्या, नहीं। सो खाना बनाने के लिए मेरे पास अलग नौकर है, ड्राइविंग करने के लिए मेरे पास अलग नौकर है, राइट। सो दिस इज द मास्टर एंड एजेंट स्लेव आर्किटेक्चर इन जेनकिन, राइट। ये कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वी विल सी दैट लेटर, राइट। नाउ ये समझ में आया सबको, किसी को कुछ डाउट है एजेंट में और मास्टर में क्यों करना चाहिए, कि मैंने पूरा बैकग्राउंड दिया है कि व्हाई वी नीड मास्टर एंड एजेंट्स, राइट। क्योंकि देर आर डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस that will not gonna work on only master. That's why we may need or we must need a different agents, so that based on our requirement we will run our pipelines on those particular machines or servers. Anybody has any questions on that? In this scenario, the agent name is keyword to run the pipeline. That is means in Sorry. our agent is a keyword in the pipeline for the particular job running purpose. यस 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 यस, मतलब हर एक पाइपलाइन में तुम जब पाइपलाइन लिखोगे, उस पाइपलाइन में यू हैव टू मेंशन दैट कि दिस पाइपलाइन विल रन ऑन विच एजेंट, तो वहां पे एजेंट का नाम देना पड़ेगा। बट बिफोर दैट वी नीड टू रजिस्टर दोज एजेंट्स इन आवर जेनकिन सेटिंग्स, सेटिंग में तर उसको रजिस्टर करना पड़ता या केसमध्ये जर आपण एजंट एनी लिहून दिला आणि आपल्याकडे ऑल एजंट अवेलेबल आहेत, मग ते ऑल याच्यावरती रन होईल का? नाही। एनी म्हणजे तो डिसाइड करून कशावर घ्यायचा, तो मास्टरवर पण घेऊ शकतो, त्याच्या मनावर। त्याला वाटलं की मला ह्या ड्रायव्हरला, मी फक्त 10 ड्रायव्हर बाहेर आहेत, मी फक्त गाडी काढा, जो एजंट पटकन जाऊन काढीन तो हिरो। कारण तू मेन्शनच केलंयस की लेट से विंडोज मशीन, विंडोज ड्रायव्हर गाडी काढ म्हणून, असं नाही म्हणला तू, काय म्हणला, जा गाडी काढा, जो पटकन गाडी पशी जाईल तो हिरो। एनी एजंट म्हणलं तर मग तो मास्टरवर पण जाऊ शकतो, तो विंडोज वर पण जाऊ शकतो, आणि तो लिनक्स वर पण जाऊ शकतो, आणि मॅक मशीनवर पण जाऊ शकतो। त्याची काही गॅरंटी नहीं, बिकॉज यू हैव जस्ट सेट गो एंड रन द पाइपलाइन, और उसमें आपने एजेंट लिखा है एनी, एनी मतलब जो भी रहेगा वो, राइट। मोस्टली वो मास्टर पे ही रन करेगा, एनी करोगे तो एनी कभी नहीं Hello. चलेगा नहीं। हाँ, यस। Yes, sir. Like, but how like so that clients are going to work like slaves, like which applications they are installing in that PC or what? Like they are having VMs or what? मुझे क्वेश्चन ही Like नहीं all समझ the में। yeah, sir. It's like how they work or how they communicate with each other. वही तो बोला ना मैंने, दे विल कम्युनिकेट विथ ईच अदर यूजिंग टू डिफरेंट मेथड्स, वन इज यूजर नेम पासवर्ड, सेकंड इज एसएसएच कनेक्शन। तो वो कम्युनिकेशन अपने को पहले बोलना पड़ता है, अपना जो जेनकिन की सेटिंग्स है ना मास्टर की, उस सेटिंग में जाके अपने को सेटिंग में जाके अपने को रजिस्टर करना पड़ता है सारे एजेंट्स, उसको नाम देना पड़ता है, लेट्स से एजेंट ए, एजेंट बी, एजेंट सी। तो वी हैव टू गो टू द जेनकिन सेटिंग फर्स्ट। फर्स्ट थिंग क्या होगा, वी हैव टू क्रिएट द मशीन्स। जैसे आप एजूर का पता है आपको, सो वी विल गो टू द एजूर एंड जस्ट क्रिएट टू डिफरेंट मशीन, एक विंडोज का लेंगे और एक आप मैक का मशीन लोगे। देन यू हैव टू गो टू द जेनकिन सेटिंग, सेटिंग में जाने के बाद वी हैव टू से रजिस्टर एजेंट, राइट। फिर वहां आपको उसकी Yeah, एसएसएच, that means, sir, client or node have like their own machines, two machine. One is Windows and another one is Ubuntu. हाँ, And that machines we are going to register in master node. हम्म, Huh? हम्म, बरोबर, Yeah, that this तो सिनेरियो ना सर. Actually मी थोडी लेट जॉईन झाले म्हणून विचार नो प्रॉब्लेम। फॉर दॅट.
सो बेसिकली आपण दोन वेगळे मशीन बनवतो, जेवढे हवेत तुम्हाला एजंट तेवढे मशीन बनवतो as per your requirement, and then we have to go to Jenkins settings and register all those agents. सिंपल एक्झाम्पल, कंपनी मालक चालवतो का? कोण चालवतो? एम्प्लॉईज. मग जेव्हा एम्प्लॉई हायर होतो त्यावेळेस त्याला आपण काय करतो? त्याचं बॅकग्राऊंड व्हेरिफिकेशन करतो, त्याचं नाव घेतो, त्याचं गाव घेतो, डॉक्युमेंट्स घेतो, त्याला फिजिकली प्रॉपर चेक करतो, म्हणजे हा माणूस तोच आहे का, राईट? एव्हरीथिंग वी जस्ट टेक इट, वी हॅव रजिस्टर्ड हिज डिटेल्स इन अवर कंपनी पोर्टल. त्याला आपण ईमेल आयडी बनवतो, त्याचा आयडेंटिटी कार्ड देतो, अँड देन वी विल गिव्ह हिम अ लॅपटॉप अँड वर्क. जो एम्प्लॉय आज आला का त्याला आपण कामाला लावतो का? नो. देर इज अ प्रोसेस टू रजिस्टर समथिंग ऑन इनसाइड अवर सेटिंग्स. सेम आहे. एजंट घेतला म्हणजे एजंटला पहिले इन्स्टॉल करा, म्हणजे आपण लोकांना हायर केलं. हायर डॉक्युमेंट्स घ्या, म्हणजेच काय, SSH की घ्या ह्याच्या जेनकिनच्या गोष्टीमध्ये. मग आपल्या सेटिंगमध्ये जा, आपल्या सेटिंगमध्ये जा म्हणजेच काय, आपल्या कंपनीचं सॉफ्टवेअर असतात इंटरनल, त्यामध्ये एम्प्लॉयचा डेटाबेस असतो, त्यामध्ये डेटा एंट्री ऍड करा. थर्ड पार्टी सॉफ्टवेअर सांगा का हा खरंच या गावचा माणूस आहे का, खरंच याने XYZ कंपनीमध्ये काम केलंय का, ह्याच्याकडे ऑफर लेटर आहे का, एक्सपिरियन्स लेटर आहे का, सॅलरी स्लिप आहे का, बँक स्टेटमेंट आहे का, PF स्टेटमेंट आहे का. तसंच आपण जेनकिनच्या मास्टरमध्ये पण सांगतो, ह्याचा SSH की द्या, याचा पब्लिक, ह्याचा प्रायव्हेट IP ऍड्रेस द्या. कारण कसं बोलणार मी, मग मला प्रायव्हेट IP पाहिजे, SSH की पाहिजे, याचं नाव द्या. ह्या सगळ्या गोष्टी क्रिएट केल्यानंतर मग आपण त्याला आयडेंटिटी कार्ड देतो, एम्प्लॉईला लॅपटॉप देतो, राईट, त्याला बॅग देतो, आणि नंतर मग त्याला नेक्स्ट डे म्हणतो की तू उद्यापासून लॉग इन कर. त्याला आपण क्रिडेन्शियल देतो, तो आपलं मशीन घेतो, त्यावर त्याचे क्रिडेन्शियल आपण जे प्रोव्हाइड करतो कंपनी, ते लॉग इन करून कामाला सुरुवात करतो. तसंच इथे आहे. कळालं? समजलं का सगळ्यांना? Yes, sir. बाकी लोकांना कोणाला काय प्रॉब्लेम आहे? SSH मध्ये मास्टरकडे पब्लिक की राहील ना रजिस्टर करण्यासाठी. काय काय SSH मध्ये मास्टरकडे पब्लिक की राहील आणि नोडकडे प्रायव्हेट की. नाही नाही नाही, नोडकडे पब्लिक असते, मास्टरकडे प्रायव्हेट असते. ओके. कधी पण SSH करताना लक्षात ठेवायचं, आपल्या घराचं लॉक घराला असतं का चावी घराला असते? लॉक. लॉक म्हणजे पब्लिक. लॉक कोणी पण पाहू शकतो. लॉक कुणी पण पाहू शकतो, बिकॉज इट्स अ पब्लिक, इट अप्लाइड ऑन अवर डोअर. पण की सगळ्याकडे असते का? नाही नाही, की असते. ज्याला घरात जायचंय त्याकडेच की असणार ना. येस. हा, मग त्या जेनकिनच्या नोडवर कोण जाणार आहे? मास्टर. मग मास्टरकडे पब्लिक की पाहिजे का प्रायव्हेट की पाहिजे? त्याच्याकडे प्रायव्हेट राहील. प्रायव्हेट पाहिजे, करेक्ट. म्हणजे कधी पण, म्हणजे याच केसमध्ये नाही आपल्या जेनकिन्सच्या, व्हेनेवर यू आर वर्किंग विथ SSH, ज्याला कनेक्ट करायचे त्याच्याकडे प्रायव्हेट असली पाहिजे, आणि ज्याला कनेक्ट करणार आहोत त्याच्याकडे पब्लिक असली पाहिजे. कळलं का तुम्हाला मास्टर काय असतो, एजंट काय असतो, त्याची गरज काय? आपण सिनारिओ पण डिस्कस केले, बरोबर? ओके, नाउ वी विल सी द पाईपलाईन्स. आता पाईपलाईन पण 3 ते 4 प्रकारच्या जेनकिन्स मध्ये आपण लिहू शकतो. पहिली पाईपलाईन असते फ्री स्टाईल. फ्री स्टाईल म्हणजे काय? क्लिक 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 करा, हॅलो बिलो टेस्टिंग करायचं, ते आपण वापरतो फ्री स्टाईल पाईपलाईन. ऍक्च्युअल पाईपलाईन असतात स्क्रिप्टेड पाईपलाईन, डिक्लेरेटिव्ह पाईपलाईन अँड मल्टी ब्रांच पाईपलाईन. आता मल्टी ब्रांच पाईपलाईन का? मल्टी ब्रांच म्हणजे आपल्या गिटच्या ब्रांच. मी तुम्हाला जे टूलचं म्हणजे जे फ्लो घेतलाय शिकवायचा, लिनक्स, गिट, जेनकिन, याच्यामुळेच घेतलं की तुम्हाला गोष्टी क्लिक व्हावा आणि कळावं. सो आपल्याकडे मास्टर एक ब्रांच असते, ती डिप्लॉयमेंट कुठं करते? प्रोडक्शनला. डेव्हलप ब्रांच असते, ती डिप्लॉयमेंट कुठे करते? नॉन प्रोडक्शनला, म्हणजे डेव, QA, UAT जे काही एन्व्हायरमेंट आहेत त्यावर. सो मल्टी ब्रांच पाईपलाईन म्हणजे मला प्रत्येक ब्रांचसाठी सेपरेट पाईपलाईन बनवायची, राईट? पाईपलाईन म्हणजे जेनकिनची फाईल असते, राईट? त्याच्यामध्ये आपण कोड लिहितो ग्रुवी लँग्वेजचा. ग्रुवी एक स्क्रिप्टिंग लँग्वेज आहे, सिमिलर टू पायथन. त्यामध्ये आपण जेनकिनच्या पाईपलाईन लिहितो, ठीक आहे? सो
स्क्रिप्टेड पाईपलाईन म्हणजे काय, की त्यामध्ये प्रॉपर गृहीचाच कोड असतो. गृहीचाच कोड म्हणजे कसं, आपण त्यामध्ये फॉर लूप लावू शकतो, कंडिशन्स लावू शकतो, इफ कंडिशन्स, ट्राय कॅच लावू शकतो. दॅट इज प्युअर ग्रुव्ही प्रोग्रामिंग लँग्वेज पाईपलाईन विच इज स्क्रिप्टेड पाईपलाईन. इंडस्ट्रीमध्ये जास्त वापरतात डिक्लेरेटिव्ह पाईपलाईन. डिक्लेरेटिव्ह पाईपलाईन पण ग्रुव्हीमध्येच असते, पण त्यामध्ये आपण फॉर लूप, इफ कंडिशन्स, ट्राय कॅच हे लावू शकत नाही. इट इज स्टँडर्ड असतो, नॉर्मल स्टेजेस, अँड दॅट इज रिकमेंडेड वन फ्रॉम जेनकिन्स. सो आपण पण जे काम करणार आहोत, जेवढ्या पाईपलाईन आपण करणार आहोत, दोज पाईपलाईन वी आर गोइंग टू क्रिएट ऑन डिक्लेरेटिव्ह पाईपलाईन. सो ह्या दोन पाईपलाईन, एक आहे स्क्रिप्टेड पाईपलाईन, त्यामध्ये प्युअर गृहीचा कोड लिहितो आपण, जे काय सिंटॅक्स वगैरे आहे तो. डिक्लेरेटिव्ह पाईपलाईन, आणि तिसरी असते मल्टी ब्रांच पाईपलाईन. सो मल्टी ब्रांच पाईपलाईन मध्ये पण आपण गृहीचाच कोड लिहितो, पण मल्टी ब्रांच म्हणजे काय, माझ्या मास्टर